Hello, students. Chalo, let's begin in the sixth lecture of the third chapter. Okay, so let's do with the economic environment in India. Okay, how is it, how it happens, how it forms, and there are so many other things also. So we are going to deal with that. All right, so basically the economic environment जो है इंडिया में वो कैसे establish होता है, how does it perform, how does it contribute to the business enterprise, यहाँ पे इसका क्या role है, वो सारे roles, सारी जो भी पर्पस है बिजनेस में इन सब चीजों का, उन सब चीजों को वी विल डू वन बाय वन. Okay, now you'll be thinking, who is she? If somebody doesn't know, she is our financial minister. Okay, she is a finance minister of India. She is Nirmala Sitharaman ma'am, and she was earlier the defense minister. Okay, she is the financial minister, and she is she is just running the economy of India. So that is why I have put her picture here. Okay, so let's see the economic environment of India. Okay, so the environment in India consists of various micro level factors related to the means of production, distribution of wealth, which have an impact on business and industry. See, there are some micro level concepts जो कि मतलब बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं, which consist of the production, okay, and the distribution. जो भी वेल्थ है, जो भी आपका प्रॉफिट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर whatever you see, whatever you have planned, वो सब कुछ it consists of that in the business enterprise. Okay, so it's have an impact on the business and the industry as well. Okay, business and industry. So we are gonna deal with that. Okay, we are gonna see कि production or distribution जो है, how does it lead to affect the business and industry, what are the factors, what does this mean, and so on and so forth. Okay, so let's include what does this mean. Okay, so the first is stage of economic development of the country. Second is the economic structure in the form of mixed economy, which recognizes the role of both public and private sectors. Third one is economic policies of government includes industrial, monetary and fiscal policies. अभी ये सब कुछ जो ये 3 points हैं, okay, I will be explaining you one by one. So जब मैंने ये बोला कि it includes the production, distribution, economic environment का मतलब ये है, तो जो impact वो डालता है, what this impact includes, what it includes the economic development of the country. Okay, how does it develops? See, there are so many things, there are so many activities happening in the economy where you'll see that these activities are correlated to the financial factors and the financial resources of our business enterprise, and ultimately they are related to the profits, to the wealth, to the cost, and everything you have, every outcome you have planned for. Okay, so this is how the economic development happens. This is how it creates a correlation between these things and these activities. So this is the stage. Okay, this ये जो contribution है, it is a stage of economic development of the country. Okay, the next one is, let me just erase this. Okay, so the economic structure in the form of a mixed economy. See, Abhi, you will be asking what is mixed economy. India is having a mixed economy, okay, where public and government intervention is there. Both the intervention is there. That is what the mixed economy is. Okay, this is what we call mixed economy. So, अभी ये क्या बोल रहा है, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, इट
recognize the role of public and private sector. It gives you कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या क्या आपको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ द थिंग्स. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ both these things happen. Okay, next is economic policies of government, including industrial, monetary, and fiscal policies. See, we are talking about the policies. What does this include? What does it impact, and what does it have? Okay, so first we are done with the economic development. It leads to economic development, as it says economic environment, so it leads to economic development in so many ways in the India, in the country. Okay, the second one, we talk about the roles. Okay, as it is a mixed economy, it gives a role, it provide a role to public and private both. Okay, to public and private. See, if you do if you want to write these points, write in this way, because that's how you will be able to remind that what economic environment includes. Okay, the third one is, as we are just looking at this, so this is economic policies जो government की होती है. It includes so many different sort of policies which is named by industrial, fiscal, and monetary policy. Abhi you will be asking, what is this? So industrial is, which is, as the name suggests, which is related to the industrial and the commercial processes, commercial policies. ऑल राइट, देन जो भी कमर्शियल होती है, जो भी इस बेसिस पे होती है, इंडस्ट्रियल बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए, तो दैट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. देन व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी? व्हेन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस मॉनेटरी? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स, मॉनेटरी का मतलब ही होता है कि which includes money, monetary money. It's मतलब आप उससे याद रखते हैं, monetary means money. Okay, पैसा, finance. So it relates to that sector. Okay, money bills या और भी बहुत सारी policies हो गई, बहुत सारी आपको कोई limit set करना कि इस limit के आगे you have to do this, that, whatever it is. So ये monetary policies हो गई. Then comes with the fiscal policies. You will be you will be reading these in the economic section, where you talk in fiscal mein, you talk about bad debts, you talk about the losses, you talk about the recovering of losses, recovering of debts, and all these things. So this is the fiscal thing. So basically what I was trying to say is that industrial, commercial, monetary, fiscal, ये सब तरह की जो भी तरह की जो policies हैं, these are the functions of the these are the things which has included in the economic development, in the economic process. Okay, these includes, the economic environment includes these things. Okay, it sounds, if you haven't studied the economics yet, then you will be feeling quite weird, but it's all right. I have explained in brief, and it is okay for ओके इन दिस. जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा अंदर एकदम डिस्कस करके पढ़ना, मतलब रिगार्डिंग दीज टर्म्स. सो फॉर बिजनेस मैनेजमेंट इट इज क्वाइट फाइन. Alright, next, what does else it includes? Economic planning includes 5-year plans, annual budgets, and so on. See, economic environment में economic जो plans होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे हैं. So there are 5-year plans. Okay, 5-year plans जो हैं वो, मतलब obviously 5-year लिखा हुआ है तो you will be able to understand. These include so many, मतलब agriculture का, economy का, middle class के लिए ये वो बहुत सारी चीजें होती है. So they all come into a process. Then the annual budgets, जो बजट्स बनते हैं, ये सब जो इकोनॉमिक प्लानिंग के पार्ट हैं. ओके, सो ये जो एंड दिस वी आर गोना डू इन आवर सेकंड बुक, और या इन आवर सेकंड बुक. सो बजट्स जो होते हैं, इंटरिम बजट्स होते हैं, मेन बजट्स होते हैं, विच इज
designed by and which is introduced by the finance minister. Okay, so ये सब चीजें जो होती है ये सब भी इंक्लूड होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर. देन इकोनॉमिक इंडाइसेस. अभी इंडाइसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, distribution of income, rate and growth of GNP, per capita income, disposable personal income, rate of saving and investment, value of export and import, balance of payment and so on. See, अभी ये सारी terms जो हैं ये I can explain you in brief individually. See, economic indices का मतलब है there are these sections. Okay, the national income you will be aware of. Okay, then the distribution of income की income distribute कैसे हो रही है, how does it is distributing, how does it is utilizing. Then GNP growth net product gross net product जो होता है, GNP is gross net product. Okay, तो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट जो है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, उनकी ग्रोथ क्या है, सिमिलरली वो ग्रोथ के साथ साथ में उनकी रेट्स अभी क्या 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 मतलब क्या रेट्स तक पहुंच गई हैं, उनके क्या आउटकम्स हैं, एंड सो मेनी थिंग्स देयर आर. Okay, then the per capita income, disposable personal income, rate of saving and investment, value of export and import, balance of payment and so on. बहुत सारी चीजें होती है, ये सारे terms economic terms है and it includes in the economic environment, and I can discuss here these terms, but still I would like you to discuss in the economic sections which I will be taking. So economic के subject पे बात करेंगे, फिलहाल you just need to know the terms कि environment, economic environment में क्या include होता है, how does it affect. Okay, so you just need to know this thing only, that is why I'm not explaining in this much. Okay, then infrastructure factors जो होते हैं, अभी अपन ने बात करी इकोनॉमिक इंडाइसेस की. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स, modes of transportation, communication facilities and so on. See, these are the economic factors. और economic factors में you have the infrastructure factors. Infrastructure से अगर इस वर्ड का मतलब किसी को पता नहीं है ना, I can tell you an story of mine where I didn't know when I was in 9th about the word infrastructure. I was like something like architecture, मतलब in structure का मतलब क्या, ढांचा, something like that यही होगा. But no, infrastructure का मतलब होता है ढांचा, सही है, लेकिन it's in a wider way. It is like it includes every important and crucial body. That includes financial institutions, banks, modes of transport, communication facilities, and so on. Okay, and modes of transportation, communicate, जो भी ये सब चीजें, these are the large bodies. Okay, so these are the structure sort of, लेकिन it's infra, it's मतलब if you haven't know this name तो अभी आपको मालूम पड़ गया है, so you can remember. But अगर नाम से जाते हैं तो it is like quite weird. Okay, so मतलब किसी को भी ऐसे मतलब ऐसे लग सकता है. So yeah, so infrastructure includes these things. Okay, फिर business enterprise in India do realize the importance and the impact of economic environment on their working. Okay, see, I'll tell you one thing कि business environment जो है, business enterprises जो है, they has realized that कि क्या क्या importance है, क्या आपको impact पड़ सकता है economic environment का उनकी working पे. ओके, सो जो मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस, सिमिलरली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. सो बेसिकली इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है ये, सेकेंडली इनका इम्पैक्ट क्या क्या है. ओके, तो ये उनने खुद ने ये रियलाइज किया है, दे रिकॉग्नाइज दिस कि ओके
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस एंटरप्राइज. ओके, एंड अदर देन दैट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दीज कैन कम इन द इम्पोर्टेंट सेक्शन. देन इम्पैक्ट सिमिलरली, यही बैंक्स, इनकी इंटरेस्ट रेट्स होंगी, अगर वो ज्यादा होंगी तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना. या फिर अगर किसी प्रोडक्ट पे बैन हो गया और हमारी वही इंडस्ट्री है, तो भी इट विल बी नॉट गुड हमारे लिए. सो बेसिकली दे हैव रियलाइज कि हमारे प्रोडक्ट बैन हो सकते हैं अगर कोई पॉलिसी ऐसी आ गई. तो दीज आर द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, दीज आर द इकोनॉमिक डिसीजंस विच अफेक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट, okay, which affect it. So how does it affect? Let's see. Okay, so almost all annual company reports presented by their chairpersons devote considerable attention to the general economic environment prevailing in the country and assessment of its impact on the companies. See, जो भी economic environment है business का, it has, मतलब हर रोज चेंज होता है. It has been steadily changing mainly due to government policies. ओके, जो स्ट्रक्चर है बिजनेस एंटरप्राइजेस का, या आप कह लीजिए जो भी प्रेजेंटेशन है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की, जो विजन है, it is changing very on a very fast pace because of the changing government policies. ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आने के कारण देयर आर सच थिंग्स विच हैज बीन चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. ठीक है, तो जब इंडिया की जब इंडिपेंडेंट, नाउ इट इज रिटन इन योर बुक एंड आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक अबाउट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो वहां पे क्या था, जो इकोनॉमी थी वो मेनली एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज पे बेस्ड थी. ठीक है, और स्टिल अपनी इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर इज रूलिंग, बट स्टिल तब तो मेनली इट वाज एग्रीकल्चर एंड रूरल. अबाउट 70% of working population, can you imagine, 70% of working population was employed in agriculture and about 85% of population was living in villages. ओके, तो प्रोडक्शन जो भी कैरिड, whatever was carried out using irrational low productivity technology. ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज भी थी, वो मोर्टेलिटी रेट जो थी वो बहुत ज्यादा थी बिकॉज ऑफ द रूरल एरियाज, बिकॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ the culture had in that period. So there was no good public health system. In order to solve economic problems of our country, the government took several steps, including control by state of certain industries, central planning, and reduce problem of the private sector. तो उस टाइम पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसमें से कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज का को कंट्रोल करना, जो कि एक्चुअली मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई डिमांड में थी एंड दैट वाज वेरी नेसेसरी, तो उन पे कंट्रोल रखना. सिमिलरली एक सेंट्रल प्लानिंग, एक कॉमन प्लानिंग बनाए रखना. they made sure that this would happen. Then they reduced the importance of private sector. Okay, so that is what they did, so that people would be quite relevant to the government. Okay, they reduced the importance of private sector. Okay, so कहने का मतलब ये है कि they took some steps so that वो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं बन पा रहा था वो बन जाए. Okay, in accordance with the economic planning, the government gave a lead role to the public sector for infrastructure industries. जहाँ पे on the other hand, the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industry. See, तो उसी economic planning के चलते, when the economic planning was happening, okay, so they just divide things. Okay, they just divide things where public sector, just a second. Yes, public sector को they gave the infrastructure industry and प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने बोल दिया कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं आप उनको डेवलप कीजिए कि आप जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है दैट इंक्रीज.
Okay, so they did this. At the same time, government ने बहुत सारे restrictions लगाए, regulations लगाए, so that controls लगाए on the working of private sector enterprise. India's experience with economic planning has delivered mixed results. Okay, 1991 में economy ने बहुत ही सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस किया, जहाँ पे गवर्नमेंट का हाईएस्ट डेफिसिट था और द राइजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्राइसेस डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स. ठीक है, सो बहुत ही हालत खराब थी. दे हैव फेस सेवरल मिक्स्ड रिजल्ट्स. So, as a part of economic reform, the government of India announced a new industrial policy in 1991. जहाँ पे उन्होंने क्या बोला, उनने they reduced the number of industries under compulsory licensing to 6. Many of industries reserved for the public sector under the earlier policy were de-reserved. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व थी, वो उनने डी रिजर्व कर दी. उन्होंने बोला कि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो थोड़ा कम करते हैं, ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. ओके, सो एक तो ये चीज उन्होंने करी. फिर उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट को दे वाज कैरिड आउट इन केस of many public sector and industrial enterprises. Then they did policy towards foreign capital was liberalized. The share of foreign equity participation was increased, and in many activities 100% foreign direct investment was permitted. इसका मतलब ये है कि लोग foreigners जो हैं उनका investment था या उनका जो role था while investing, while producing, while manufacturing in our country, उनने वो शेयर जो है वो इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया. ओके, एंड ऑटोमेटिक परमिशन वाज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स. फॉरेन कंपनीज के साथ में जो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे ना, जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने दिए थे वो उनने सब हटा दिए. जैसे कि उनने पॉलिसी जो है वो लिबरलाइज कर दी बिल्कुल फॉरेन कैपिटल के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उनको परमिट कर दिया. टेक्निकल जो अग्रीमेंट थे उनके रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए. उन्होंने बोला कि ओके यू हैव द परमिशन. ओके, फिर जो FIPB है, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, वो सेटअप किया गया ताकि आप प्रमोट कर सके, चैनलाइज कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया को, कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देयर आर द अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट मेजर्स जब लिए गए टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज. सी, तो मतलब ये सारे जो मेजर्स लिए गए ना, ये मेजर्स लेने का एक बेसिक कारण ये था कि आप जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं टुवर्ड द ग्रोथ, वो हटा सके. इन्होंने अच्छे से सबको चैनलाइज किया. दे रियलाइज दैट इट शुड बी चैनलाइज इन अ वेरी गुड वे, okay, so that it would be effective. Then the small sector was assured all help and accorded due recognition. See, small scale sector जो था, it was not till that time इतनी recognition नहीं मिली थी उनको. तो small scale sector को अच्छे से develop करके एक recognition देना, they assured that in that plan. So this is how they worked. In essence, the policy has sought to liberate industry from the ये liberalization drastically reduced जो हो गया. पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट मतलब प्राइवेटाइजेशन था उनका जो लेवल है वो कम हो गया. एनकरेज फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसको ग्लोबलाइजेशन अपन बोलते हैं. तो इन्होंने दे टेक दी the process called LPG process, where they take the fact that liberalization जो है वो सही से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए ताकि आप पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस कर सकें. एंड द ग्लोबलाइजेशन शुड हैपन, विच मीन्स दैट यू शुड एनकरेज द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडिया in the India's industrial development. See, so basically the essence is this only, and the essence is LPG. Okay, this is the essence. Okay, where you liberate LPG. अगर ये word आपके लिए अगर if they are not
what do I say, not familiar to you, then I will be explaining you in the next lecture in detail कि होते क्या हैं. Although it has been deleted by the CBSE board for some time, but they are not separately I would be covering because it has been deleted. Lekin this is the it is the part of our next topic. So then there I will be covering these three things. Basically मतलब यही है, लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि जो भी आपने लाइसेंसिंग सिस्टम बना रखा है, जस्ट नीड टू लिबरलाइज दैट. ओके, देन इसका मतलब यही है. लिबरलाइजेशन को आप लाइसेंसिंग से याद रख सकते हैं. लिबरलाइजेशन, लाइसेंसिंग. ओके, सो LI ऐसा कुछ याद कर सकते हो आप फॉर मतलब लाइक फॉर लाइक बेसिक थिंग ऐसे याद रख सकते हो आप, सो दैट आपको वर्ड भी याद रहेगा, लिबरलाइजेशन एंड लाइसेंसिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन, जहां पे प्राइवेट सेक्टर जिसे प्राइवेटाइजेशन की बात करी, तो यहाँ पे अगर नाम से आप जाएंगे तो इट वोंट बी गुड. प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो रिड्यूस करना. ओके, सो अल्टीमेटली प्राइवेट को प्रमोट करना, लेकिन इसका मतलब ये है प्राइवेटाइजेशन का मतलब पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा उनका ड्रास्टिकली रिड्यूस करना, उनके रोल को. ओके, देन द ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जो कि आप प्राइवेटाइजेशन का सोच रहे थे, दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना. ओके, सो इट मीन्स दिस ओनली. ऑलराइट, तो ये बेसिक ब्रीफ में मतलब तो आपको याद रहने ही चाहिए फॉर श्योर. You should not even don't even try to forget. Okay, these are very important. You should know about these things. All right, so enough for the day. We'll do the next topic in the next lecture. Today it is enough, I guess. All right, so we have done the economic environment कि कैसे 1991 का क्राइसिस जो हुआ था, what does it include, what government did and what they adopt. ठीक है, और क्या पहले क्या हुआ था, what happened earlier जिस कारण से problems हुई थी, problems क्या क्या हुई थी, we have discussed. Okay, then उन्होंने क्या अडॉप्ट करा, उसका आउटकम क्या निकला, क्या वो सोल्यूशन सही था या नहीं था, एंड व्हाट द एसेंस इज LPG. ओके, essence is LPG. That is the whole essence of 1991. So this is what it is. Enough for the day. All right, I'll be seeing you in the next lecture. All right, thank you. Bye bye.